उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे? कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए? इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है, इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी करके हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे, हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस देश के लोकतंत्र को, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुषों ने की डाली है। कांग्रेस पार्टी लड़ी इस देश की आजादी के लिए, और आज भी इस देश की आजादी के लिए ही लड़ रही है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है। क्या देख नहीं रही है क्या हो रहा है? क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है, गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है? किसकी संपत्ति है? ये राहुल गांधी की संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है। ये पीएसयू किसके हैं? किसके लिए बनाए गए? आपके लिए बनाए गए, जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इसी से तो आपका रोजगार आता है, छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापारियों से आपका रोजगार आता है, किसी बड़े अडानी से नहीं आता। रोजगार नहीं देते, छीनते आपका रोजगार। तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप गैस के सिलेंडर के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं,
Priyanka Gandhi Vadra there sharpening her attack against the government, first taking on the BJP for attacking Rahul Gandhi for his disqualification, for all the comments that have been made about the Nehru Gandhi Parivar, and then talking about how this government is really taking away sources of employment, resources of the common people. Nikhil is there at Rajghat, where these allegations are being made by Priyanka Gandhi Vadra at the Sankalp Satyagraha. Nikhil, the top 5 news points from the Satyagraha so far, including what Priyanka Gandhi said. Well, Arunima, Priyanka Gandhi Vadra has gracefully bashed the BJP-ruled central government here during the address of Sankalp Satyagraha at the Rajghat, where the permission was already denied by the Delhi police. Many of the workers of the Congress party, they had already reached here, and except for Rahul and Sonia Gandhi, all the big leaders of the Congress party, they are very much present here at the site of the Rajghat, and they are silently observing this protest. But gracefully bashing the central government, she has said that time and again you have insulted my brother Rahul Gandhi and mother as well inside the parliament, and she has also called out for Prime Minister Narendra Modi as coward. She has clearly said, I am not afraid of any of the case. You can go on to file on a case, but I will not stay silent. And this is the message that has been given out from this particular place to all the workers of the Congress party, that see, because my brother Rahul Gandhi was continuously asking questions over the democracy in danger, over the unemployability and the Adani issue as well, this is the reason why he has been awarded with the disqualification inside the parliament. That means he will no longer be able to enter inside the parliament. She has also raised a couple of issues, that how Rahul Gandhi has shown his perseverance in many of the time, and she has also mentioned at the same time, she has taken this opportunity to tell that BJP leaders had gone on to portray image of Rahul Gandhi as Pappu, but when the leaders of the Bharatiya Janata Party, they had seen that how he carried out the Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari to Kashmir, that time BJP for the very first time realized that he is not what they were portraying him throughout. So this is the message which has been given out from Priyanka Gandhi Vadra, and the same gathering was also addressed at the moment by Mallikarjun Kharge as well. So the leaders of the Congress party here on the ground zero, they are bashing, they are clearly agitating against the central government, but at the same time they are also maintaining silence as well. Only few minutes are being given for the speaker to say their opinion on the same, but on the other side, the bhajans, so to say, soothing bhajans are being recited, chanted here at the Rajghat. So this is the situation from where we are reporting from inside the National Capital Delhi, from the National Capital Delhi. Nikhil, you mentioned that Delhi police had denied permission. So what is happening right now is, in spite of that denial, the police is not forcing them to vacate the area. There's no confrontation brewing. Well, Arunima, as I answer your question, I would urge my camera person to give you a 360-degree view. You can see many of the workers of the Congress party. In fact, all the leaders of the Congress party, they are already present on the stage. But on the other side, if you see the view on the screen of the CNN News 18, this place is filled with the workers of the Congress party, which is hardly the case which we see in the last couple of months now in the National Capital Delhi. But yes, coming back to the point of denial of the permission by the Delhi police, despite the permission, this is the huge gathering which we are now witnessing at the Rajghat. But we are assuming that because the protest is silent, because there is no chanting of slogans as well against the Bharatiya Janata Party, we can call this protest as peaceful. This is the silent protest which is being carried out at this particular site. So we are assuming this might be one of the reasons as to why the Delhi police has not intervened yet, and also giving the notice for the denial of the permission for the Delhi Pradesh Congress Committee, which is one of the main organizers of the Sankalp Satyagraha. The Delhi police also mentioned that to keep in check the safety and security, law and order situation, and also to maintain the traffic congestion situation as well, they are not going to allow with the permission to carry on with the protest here at the Rajghat. But this is a peaceful protest